Hello students, welcome back to the class. So in this class we are going to start off with a new chapter, that is probability. That is your chapter number 5 of algebra. Okay, so we are starting with probability and इस chapter को start करने से पहले हम understand करते हैं what is probability. Now listen over here. अगर मैं बहुत ही simple way से आपको explain करूँ कि what is probability. So probability is very simply can be understood as the measure of chance. ओके, मेजर ऑफ चांस मतलब एक तरीके से चांसेस क्या है एक सर्टेन वैल्यू आने की। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दो डाई हमको दिख रहे हैं, राइट। सो हम सभी ने लूडो गेम खेला होगा ना। लूडो गेम में अगर आप लूडो गेम खेल रहे हो तो लूडो गेम में 6 आने का क्या चांस है, ये फाइंड करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर आप लूडो को प्ले कर रहे हो, लूडो गेम खेल रहे हो, तो 1 से लेके 6 तक नंबर्स होते हैं, राइट। आप जब डाई रोल ऑन करते हो तो 1 से लेके 6 तक नंबर्स हैं, तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है कि 6 आएगा ऊपर, तो उसको मेजर करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। ओके, सो अभी वेरी फर्स्ट यहाँ पे हम सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे कि चांसेस क्या होते हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोबेबल चांसेस हो सकते हैं, उनको ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए। सो यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस सेट है, दैट इज योर प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद 5.1। यहाँ पे हमको पॉसिबिलिटीज और चांसेस को अंडरस्टैंड करना है। ओके, नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज Vanita knows the following sites in Maharashtra. She is planning to visit one of them in her summer vacation. Ajanta, Mahabaleshwar, Lonar Sarovar, Tadoba Wildlife Sanctuary, Amboli, Vaigarh, Matheran, Anandvan. Okay. So Vanita knows the following sites in Maharashtra. She is knowing these sites in Maharashtra and she is planning to visit one of them. So what is the number of possibility over here? Now let us try to understand what is the possibility over here. देखो यहाँ पे total कितना places हो जानती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay, so there are 8 places that Vanita knows. Now out of these 8 places only she will visit one place, right? So the total number of possibilities over here is 8. Okay, there are 8 sites in Maharashtra where Vanita can visit. There is equal possibility of for each site, hence the number of possibility are 8. Okay, now let's get to the next question over here. Simply आपको यहाँ पे देखो काउंट करना है कि पॉसिबिलिटीज कितने सारे हैं। Any day of a week to be selected randomly. ओके, एनी डे ऑफ अ वीक टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। सबसे पहले यहाँ पे काउंट करो कि कितने डेज होते हैं वीक में। वी ऑल नो दैट इन अ वीक देर आर ओनली 7 days, राइट। सो द टोटल नंबर ऑफ डेज दैट फ्रॉम विच इट कैन बी सिलेक्टेड कैन बी 7. So hence the number of possibility over here is 7. Okay, getting it? Select one card from the pack of 52 cards. Now listen over here. आप सभी लोग में से अगर किसी ने गेम खेला होगा कार्ड्स का, सो आप सभी को पता होगा दैट 52 कार्ड्स इन द गेम ऑफ कार्ड्स, राइट। ना इसमें से आप कोई भी एक कार्ड को सिलेक्ट करना है रैंडमली। सो अगर कोई भी एक कार्ड को सिलेक्ट करना है रैंडमली, सो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ओवर हियर? So the total number of possibilities over here will be 52 because there are 52 cards in a pack of cards, right? And one card is to be drawn randomly, then there are equal possibility of each card, hence the number of possibilities are 52. Okay, let's get to the next question. One card, one number from 10 to 20 is written on each card. Okay, one number from 10 to 20 is written on each card. Select one card randomly. नाउ लिसन ओवर हियर। यहाँ पे आपके पास में कुछ कार्ड्स हैं जिस पे आपके पास में नंबर्स लिखे हुए हैं, दैट इज फ्रॉम 10 to 20. सो फ्रॉम 10 to 20 हाउ मेनी कार्ड्स विल बी देयर इन टोटल? There will be in total 11 cards, right? Because there is 10 also considered. So 10, 11, 12 and so on up to 20, there will be total 11 cards and any one card is drawn out randomly. So how many number of possibilities will be there here? There will be total number of possibilities of 11 cards, right? So the total possibilities is 11. One number from 10 to 20 is written on a card, then the number of the cards are 11. One card is to be selected randomly, then there are total 11 possibilities, hence the total number of the possibilities are 11. Okay, now the next thing in probability is sample space. A sample space is a very important thing. Okay, so sample space क्या denote करता है?
Sample space denotes the options of the outcomes. Okay, the options of outcomes, मतलब कि क्या आउटकम्स आ सकते हैं, इसको डिनोट करता है एक सैम्पल स्पेस. फॉर एग्जाम्पल मैं कॉइन कंसिडर करता हूँ. ओके, एक कॉइन में कंसिडर करता हूँ, तो एक कॉइन में आउटकम्स क्या आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, राइट. अगर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है. इसके अलावा कोई और आउटकम हो सकता है, नहीं हो सकता है. सो सैम्पल स्पेस, यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि यू हैव टू राइट अ सैम्पल स्पेस फॉर अ कॉइन व्हेन इट इज टॉस्ड. ओके, sample space for a coin. Now listen over here, कैसे हम sample space लिखते हैं वो भी आप देख लो. It is very important, notation is very important. कैपिटल S से हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं हम sample space को, इक्वल टू साइन एंड अ करली ब्रैकेट. अब यहाँ पे प्रोबेबल आउटकम्स क्या हैं? प्रोबेबल आउटकम्स हैं हेड या टेल. सो वी विल राइट अ कैपिटल H, comma, capital T, and close it with a curly bracket. Okay, so we always write the outcomes or the sample space in between two curly brackets. It is denoted by a capital letter S. Okay, also there are total number of the sample spaces over here. So total number of the sample spaces कैसे काउंट करना है हमको, जस्ट आपको सिंपली यहाँ पे काउंट करना है कितने एलिमेंट्स हैं इस ब्रैकेट के अंदर. सो यहाँ पे H है, यहाँ पे T है, सो 1 2. So there are total 2 outcomes, right? So the number of total outcomes for the sample space will be n of S, capital S, equal to 2. Getting it? Chalo, let's try to solve some questions in the exercise 5.2 and you will get to understand. So for each of the following experiments, write sample space S and the number of the sample points ns. ओके, देखो यहाँ पे आपके पास में कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं जिनका आपको सैम्पल पॉइंट्स और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स को लिखना है. ओके, देखो यहाँ पे जब आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो आपको हेड या फिर टेल मिलेगा, और साथ में ही अगर एक डाई को रोल कर रहे हो तो उसके साथ में कोई नंबर मिलेगा, राइट. फॉर एग्जांपल हमको नंबर 5 मिलता है और हमको हेड मिलता है, तो हेड और 5 यहाँ पे H5 बना सकते हैं. उसी तरीके से फॉर एग्जांपल करो कि हेड की जगह टेल आता है और नंबर 5 है, तो यहाँ पे टेल 5 हो सकता है. तो इस तरीके से हमारे पास में जो सैम्पल ऑप्शंस हैं वो चेंज हो सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल ओवर हियर, यहाँ पे जो हमारा जो सैम्पल स्पेस होने वाला है दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. दिस इज एक्सपेरिमेंट 1. Given one coin and one die are thrown simultaneously. To find sample space and sample points, so S will be equal to H1, H2, H3, H4, H5, H6 and T1, T2, T3, T4, T5 and T6. because यहाँ पे एक कॉइन है और एक डाई है, so यहाँ पे इधर H जब रहेगा तो H के साथ में 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, और टेल अगर रहेगा तो उसके साथ में भी सेम 1 2 3 4 5 6 रह सकता है. ओके, and what will be the total number of the sample points over here? The total number of the sample points here will be 12. Okay, so n of S is equals to 12. Let's get to the next experiment over here. Two digit numbers are formed using 2 3 and 5 without repeating the digits. Okay, so यहाँ पे देखो आपको 2 digit numbers बनाने हैं. So 2 digit numbers आपको यहाँ पे create करने हैं using the terms 2 3 and 5 without repeating them. So what can they be? They can either be 23 25 32 35 52 और 53. देखो ये बहुत ही सिंपल है. कैसे इसको क्रिएट करना, सबसे पहले आप 2 लो. ओके, 2 के साथ में क्या नंबर्स ले सकते हैं, 3 एंड 2 के साथ में 5. देन यू टेक 3 के साथ में क्या ले सकते हो, 2 एंड 3 के साथ में 5. सिमिलरली 5 लो, 5 के साथ में 2 एंड 5 के साथ में 3. So you get all these options over here. So what is the total number of the sample points over here? That is n of S is equals to 6. Okay, let's get to the next question over here. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया है the arrow is rotated and it stops randomly on the disk. Find out which color it may stop. यहाँ पे आपके पास में एक डिस्क दिया हुआ है जिसको रोटेट किया रैंडमली, और ये कहीं पे भी एक पॉइंटर के पास में आके स्टॉप करेगा. तो किस कलर के पास में आके स्टॉप करेगा उसका आपको सैम्पल स्पेस लिखना है. देखो सैम्पल स्पेस में या तो पर्पल पे स्टॉप कर सकता है, या तो रेड पे स्टॉप कर सकता है, या तो ऑरेंज पे स्टॉप कर सकता है, या तो येलो या फिर ब्लू या फिर ग्रीन पे, किसी एक पे भी ये स्टॉप कर सकता है. तो यहाँ जो सैम्पल स्पेस होगा वो क्या होगा, सैम्पल स्पेस विल बी रेड पर्पल ग्रीन ब्लू येलो और ऑरेंज. ओके, so total number of sample points will be equal to what, that will be equal to 6 because the total number of the colors that we have is 6. Okay, let's get to the next question over here. In month of March 2019,
फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5. ओके, आपको वो डेट बताना जो एक मल्टीपल ऑफ 5 है. सो विच ऑल डेट्स कैन बी द मल्टीपल ऑफ 5. सो यहाँ पे देखो जो मल्टीपल ऑफ 5 डेट्स होंगे वो कौन से होंगे, या तो 5 होगा, या तो 10 होगा, या तो 15 होगा, या तो 20 होगा, या तो 25 और एल्स 30, राइट. इनके अलावा कोई और डेट्स हो सकता है जो मल्टीपल ऑफ 5 रहेगा, नहीं. So over here the sample space here will be 5, 10, 15, 20, 25 and 30. What will be the total number of the sample points over here? That will be n of s is equals to 6. Okay, let's get to the next question over here. From a road safety committee of 2, from 2 boys B1 and B2 and G1 and G2 2 girls, complete the following activity to write the sample space. Okay, there's a road safety committee of 2. Okay, so जिसमें एक टीम है जो जिसमें 2 बॉयज़ हैं B1 एंड B2 और एक टीम है जिसमें 2 गर्ल्स हैं G1 एंड G2. ओके, जिसमें हमको कंप्लीट करना है यहाँ पे हमारा जो एक्टिविटी है. सो कमिटी ऑफ 2 बॉयज़. ओके, सो B1 एंड B2. So and committee of 2 girls G1 and G2. Committee of 1 boy and 1 girl will be what? 1 boy 1 girl can be B1 and G1, B1 and G2, B2 and G1, B2 and G2, right? So over here the total sample space that will be, देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास में 2 कमिटीज बनी हुई है, राइट. सो 2 कमेटी बनी हुई है B1 B2 एंड G1 G2 की, और साथ में हमारे पास में 1 बॉय 1 गर्ल की टोटल नंबर ऑफ कमिटीज कितनी है, 4 है. सो टोटल सैम्पल स्पेस यहाँ पे हमारा कितना होगा. सो टोटल सैम्पल स्पेस विल बी B1 B2, B1 G1, B1 G2, B2 G1, B2 G2 and G1 G2. Okay, so the total number of sample space is 6. Okay, I hope you get this. सो दैट्स इट फॉर द डे. आज के लेक्चर में कोई होमवर्क नहीं है आपके पास में. सो दैट्स इट, आपको जस्ट इसको वॉच करना था. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद प्रोबेबिलिटी. सो टेक केयर, गुड बाय.